Welcome, everyone, and thank you for joining us to this ninth session of the online event series titled Deadline or Death Sentence, State Violence and Indigenous Adivasi Peoples' Resistance in India. This series is organized by Diaspora Networks in solidarity with Adivasi struggles. My name is Lotika Singha, and I'm speaking on behalf of International Solidarity for Academic Freedom in India, INSAF India for short. Today's session will be moderated by my colleague Pooja, and I have the honor to introduce our two speakers, Aditi, who is a researcher and activist, and Simanchal Achari, who is a social activist. Thank you, Lotika. So I'll begin the session with a brief context, and then I will introduce the speakers and what they're going to speak about. Dear friends, welcome to the ninth session of Buster series, Deadline or Death Sentence. Before we delve into the subject of discussion for this session, which is conservation, another phase of militarization and land expropriation in Adivasi areas, I will briefly flag two important developments that have taken place in Bastar region of Chhattisgarh in the follow-up of the state's systematic militarization of the area, leading to the killings of Adivasis, including Naxal cadres and leaders, in the name of making Bastar Naxal Mukh or Naxal free by March 2026. These developments point towards the intimate link between systemic militarization and killings of Adivasi on the one hand, and conservation policies leading to Adivasi land expropriation on the other hand. First development is that the state has started cutting down forests in Bijapur district of Chhattisgarh at the end of this last year and beginning of January this year in the areas where the Naxal movement has weakened as a result of the brutal military tactics of the state. The forests were cut down without seeking the consent of the Gram Sabha and also despite their opposition. The Forest Department officials characterized the cutting down of forests as timber harvesting, a term used in the so-called scientific forestry inherited from colonial times. Scientific forestry has historically been used by the Forest Department to legitimize its destruction of forests in India. The Forest Department officials stated that now that Naxalism is nearing the end, they have restarted timber harvesting, which has stopped in the last 30 years since the presence of Naxal movement in the region. Therefore, the weakening of the resistance is opening up the way for widespread environmental devastation. The news of second development comes from a piece published by Malini Subramaniam yesterday on scroll.in. Her piece tells us a story of how the state is using different surveillance tactics to monitor the lives of people living within the regions which were Naxal strongholds. People's households in some villages of Bijapur district of Bastar region, which were considered Naxal strongholds, are painted with numbers so that people living in those numbered houses can be surveilled using drones. People living in these villages are now required to remember their house numbers, otherwise, they are forcibly taken to a paramilitary camp. These surveillance tactics severely restrict the movement of villagers even during a health emergency. Overall, this piece tells us how the state uses surveillance tactics as a tool of expropriating Adivasi land and coercing Adivasi people into submission. These developments tell us a larger story about the aftermath of the weakening of Naxal movement in the region and how state uses various tactics to appropriate Adivasi lands. In the last few sessions, we have explored the political economy of mining and extractive industries in Adivasi areas, especially Bastar, which has led to systemic killings, criminalization, and dispossession of Adivasi people from their land. In this session, we will continue this exploration by examining the links between conservation, militarization, and land expropriation. In this session, our speakers Aditi and Simanchal Achari will explore the parallels and links of states' rationale behind Naxal Bastar that led to widespread militarization in the region with the larger conservation agenda.
Conservation projects, which are presented to the general public as beneficial and environmental friendly, are actually leading to land expropriation and making everyday lives of people living in conservation areas harder. This is done by making conservation areas, including national parks and tiger reserves, more militarized by activating the Special Tiger Protection Force, surveilling the activities of Adivasis and forest dwellers using intrusive technologies. Also, it has made it harder for the people to move in and out of these areas by establishing checkposts and imposing fee on entering the area. Criminalization of traditional activities of Adivasis and forest dwellers in the region, and notifying new tiger reserves in areas that are, in quotes, left wing extremism affected areas. Now, I will invite Aditi to speak on conservation. Aditi is a researcher and an activist based in India. They write on political economy, land resource conflicts, and governance issues, and are involved in various people's movement. In their analysis, they will explore the broader pattern of how the state employs different strategies and tactics to expropriate land in the name of conservation, and that in effect conservation is another phase of extraction, militarization, and dispossession of Adivasi and forest dwellers from their jal, jungle, and zameen. Aditi will also explain how the state uses conservation measures to appropriate land in Adivasi areas in the interest of capital and big corporates, attenuating the common problem faced by Adivasis and forest dwellers living in the conservation areas across India. Thanks, Pooja. Zindabad, Johar, or Jai Bhim to everyone. It's quite a broad topic that Pooja wants me to cover today, so I'll try to do justice with the time, but just let me know when I'm crossing the threshold. Um, so, conservation practice and policy in India has always been and continues to be driven by this model of fortress conservation. And the roots of this fortress model is both in the colonial hegemony but also in the Brahminical hegemony. The idea that certain specific locations and areas need to be separated from the surrounding landscapes for the purpose of ensuring pristine, nurturing of wildlife, for conservation, for biodiversity protection. Um, these certain areas are popularly known as protected areas, tiger reserves, and in these areas, we see that the Adivasi and the other traditional forest dwelling communities, which are living and dependent upon landscapes, continue to experience that their rights and their access is restricted, their lives and livelihoods are disrupted, and eventually we see that the end product becomes that they are dispossessed and displaced from the landscape, which they call their homeland. In this conservation practice, the threat to conservation is consistently framed as coming from the localized. So people become anthropogenic pressures, people become human disturbances. People's occupation on land is sort of framed as the encroachment, and their everyday use is sort of criminalized. Rather than this, we see that the larger diversion and destruction of forest is untouched and never questioned in this fortress conservation regime. Increasingly, we see that the state has deployed militarization and technology as means to continue its agenda of expropriation. In this model, one sees that there is no recognition of the traditional governance and management practices of the forest dwellers, nor does it accommodate or acknowledge the efforts to resist forest diversion for large scale industrial development projects. In fact, such conservation approaches are aimed at consolidating land, resources, the decision making power, and the governance in the hands of the state, as well as a few other actors, which are usually the forest and the wildlife bureaucracy, the urban conservationists, and the private developers. Now, India has always adopted a very aggressive form of conservation expansion, right from 1972, when the Wildlife Protection Act was notified, and in 1973, when the Project Tiger was also launched in the country. So in 1973, we see, to give you an example, that it starts with the demarcation of landscapes into 9 tiger reserves across the country. To today, 2026, where we have a network of 58 tiger reserves spread across 19 states. And that is a number which is constantly increasing with new notifications each year.
Now, this is just the number of the tiger reserves. If one were to look at the protected area network itself, which has multiple categories, it goes beyond 1,000. A common practice since early on within the forest governance and the conservation discourse has been the use of law to criminalize and falsely incarcerate forest dwellers, the Adivasis, the nomadic, and the denotified communities. This criminalization is of community, of their practices, of their dependence, as well as on their occupation. Now, the criminalization we see continues even after the enactment of the FRA, where we see that post 2006, what is recognized as a legal right under FRA is criminalized under Indian Forest Act and other forest laws. And this criminalization happens in a much more intensive way in the conservation landscapes. So the regular forest, you see the degree of criminalization increasing as one shifts from the regular forest landscapes to their conservation status. The use of physical force has been another continuing feature in this broader discourse of conservation in India, where verbal and physical abuse, physical and sexual assaults, demolition and bulldozing of houses in the name of encroachment, use of force to sort of displace and remove people from these territories. Some of the examples could be the use of elephants to bulldoze houses in the Kanha tiger reserves in early on 1970s in Madhya Pradesh. In fact, some of these are key factors which constitute the concept of historical injustice and which led to sort of mass resistance and the final enactment of Forest Rights Act. It was this resistance which in ways gets incorporated in the law itself, because the law, the Forest Rights Act, clearly states that it is applicable to all lands, including the protected areas. So the fact that the law specifies that it includes protected areas is sort of rooted in this injustice of the conservation paradigm prior to 2006. Evidently, we see that once FRA is enacted, the biggest resistance to Forest Rights Act also comes from the conservation lobby, who are the first one to file a case in the Supreme Court challenging the validity of FRA, the constitutional validity of FRA, which is popularly called the Wildlife First case. And it's a case that still continues. Almost 20 years of FRA we are approaching, and the case still continues in the court. And a major petition of the petitioners in this case is the removal of protected areas, so taking protected areas outside the purview of FRA. Even when FRABC was under drafting and about to be officially notified, the Wildlife Protection Act, which is the law for the conservation and biodiversity protection, undergoes a major amendment. And it leads to a formal adoption of this core and buffer model of tiger conservation, where core will follow a strategy of inviolateness and buffer will follow a so-called strategy of coexistence. It also leads to the establishment of a statutory authority called National Tiger Conservator Authority, and adoption of a specific legal concept called voluntary relocation. Now, this concept, though, is grounded in rights and consent-based framework, but we see that obviously it operationalizes later in a very different format. An important part of this 2000 amendment for us to remember is also that FR is about to come, and so WLPA accommodates and makes space for recognition of rights within the conservation law. So it's the WLPA which actually mandates for the recognition of rights, not just the FRA. However, even that doesn't get operationalized post 2006. Interestingly, since the law adopts the concept of voluntary relocation, from 2006, we have seen the state not reporting a single family's relocation as non-voluntary. So automatically, by default, all relocations post 2006 become voluntary. And that is contrary to the evidence and testimony of people. Even the conservation lobby and the bureaucratic practice we see continues to put forward the idea that no FRA is applicable within the protected areas. No forest rights are applicable inside the core areas. There is no Gram Sabha authority inside the core areas of the tiger reserve. And people have to struggle constantly to get their rights recognized inside the core area of tiger reserve, which is something I'm not going to touch because I'm guessing that Simanchal Bhai will elaborate much more on that. But the struggle to ask and demand for the recognition of rights is met with further criminalization and further deployment of tactics of militarization.
Now, almost 18 years have passed since the Forest Rights Act came into force, and the Forest Rights Act transforms this governance regime of conservation because it institutes the authority for conservation in the hands of the institutions of Gram Sabha. But in spite of these 18 years, we see that the conservation practice and policy in India has been exclusionary, alienating, violent, and continues to advocate for mass scale denial of rights and criminalization and displacement. In fact, on 19th June 2024, the National Tiger Conservator Authority issues a letter directing the state governments of 19 states to expedite relocation. And the reason for expediting relocation is to ensure that the tigers are conserved. The future of tiger is conserved. Um, and it identifies 64,801 families living inside the core area of Tiger Reserve. So at bare minimum, we are seeing that in 2024, when the whole world is talking about, a indigenous framework to conservation, NTCA in India sort of directs for a relocation of a minimum of 4 lakh people. Now, these are again documented numbers, but we know that the numbers go much more beyond what the record is saying. Now, the reason I'm putting this forward is because when we think of militarization and when we think of conservation areas, there is something essential to understand that compared to other forest lands of other nomenclature, especially which are the non-conservation nomenclature, the landscape notified as tiger reserves and protected areas are being operated and turned into places of heightened security. So there is an intensive push for centralized controlling and policing. The landscape is obviously demarcated and categorized into different kind of zones. So zonation becomes an exercise through which the landscape is reconfigured into accessible zones, non-accessible zones, permissible zones. So the zonation itself depicts a sort of policing tactics, and zonation is the premise on which the conservation model in India operates. Now, these so-called core areas of tiger reserves, they are the ones which I would say undertake the intense form of policing. Now, how is this policing happening in every day? This policing happens in form of curfew hours, in form of checkpost, in forms of gates that you have to cross, in forms of watchtowers which are erected in these tiger reserves, in terms of everyday frisking of bodies that happens, in terms of questioning where you are going, how are you going. So a certain invasion into your access and your movement itself, and continuous demand to prove and supplement your identity or the identity of visitors in record keeping as to where you have been. The records are quite kept on the checkpost. These gates, checkpost, even the forest wildlife cadre, which is deployed in these areas, the patrolling of protected areas, these offices of forest bureaucracy, these armed guards, all are used as tools to govern the population. And this format of governing people in the protected areas is different from what we see outside protected areas, but forest lands. Now, furthermore, another thing that we see is that the provision of essential facilities and basic needs itself is controlled and regulated by the state in protected areas. So, roads and transportation, even basics like solar light and internet connectivity, operation of schools, primary schools, primary healthcare, access to basic welfare schemes. A number of times we have seen that these kind of provisions, basic provisions, are cut or regulated to impose conditions whereby people are left with no choice but to sort of agree to leave their homes. So the consent on paper is coerced upon and manufactured by the use of militarized tactics. And these tactics are then used to cover up and report all the people leaving the tiger reserves as voluntary relocation. Now, conservation of tiger amongst all the wildlife we see within India, a prioritization for charismatic species. Tiger obviously is one, but there's also regional charismatic species like the rhinos in one-horned rhino in the Assam region. Or recently we have seen the surgeons for cheetahs, which have been sort of introduced from Africa into the country by the PM. Now, conservation of tiger, if one were to look at, has become a national security issue. Uh,
to such an extent where poaching is branded as a national threat, a threat to the security of the country. And this threat and security discourse is used to give the state the legitimacy to act in a manner to ensure the elimination of this threat. And in doing so, the entire community is brought under the ambit of suspicion, offender, and it's sort of rendered exposed to everyday policing, surveillance, regulation of their access. The burden of proof itself is transferred to the community or to the individual rather than on the state proving that you are a poacher. Um, and I think this is crucial to also understand because a massive amount of actions which are being taken in and around tiger reserves are done saying so that there is a threat of poaching. So there's a future threat which is put forward to legitimize actions of the present. The other, I think, important feature that we are seeing is that how conservation and a large sum of plantation monies fund, so which is CAMPA, which is an expansive funding regime in the country. One sees how a larger chunk or larger proportion of conservation and plantation funds are being deployed for the expansion of militarized and policing infrastructure in the protected areas. So if one were to go through the budget itself, one would see money being sanctioned for the establishment of paramilitary camps, for security barricades, for expanding the patrolling vehicle network. Even getting drones for patrolling, then commandos, raids, special tiger protection force. All of this, a large sum of money is being put into. The use of technology and other digital intervention is further being used to intensify this form of governance of protected areas and tiger reserves. Since 2006, in the name of counting the tiger numbers, in the name of looking at the ecosystem services of these tiger reserves, we have seen massive techno-digital interventions being used, such as the use of camera traps, the use of drones, biometric databases, recording devices being placed in the forest, satellite mapping being used to look at the settlements inside or the kind of cultivation, and the use of even wildlife photography. Now, all of these, though on the front seems to be being used for the purpose of tiger, but in some ways, the people become the collateral of that exercise. And then people are being targeted. So if you were just going to collect mahua and you are captured by the technology in either a recording format or a visual format, you are immediately sort of transferred and labeled as an offender. And I think one big issue is that. The other is the issue of the violation of privacy itself. A number of women that we have met in the Paints Tiger Reserve have mentioned that how they feel threatened to actually venture into the forest. So the socio-cultural relation where you would just stroll into the forest, or you might go for loo purposes, seems to be completely taken away from you because of these technology being there, and this technology being an eye which is not visible to you. So where exactly is it? It's different from the kind of physical military deployment that we see. What we are also seeing in the protected areas and tiger reserves is that the democratic assertion for rights, especially against relocations or for a very basic demand for the implementation of FRA and PESA, is met with criminalization of the resistance itself. So you will be penalized or you will be characterized as and these are the phrases that I have drawn from the meeting of minutes. You see constantly such words being used: habitual offenders, volatile activities being reported in this tiger reserve, the presence of nexus in certain tiger reserves, the use of LWE affected, security threats, rise of insurgency. These are again the common phrases which are used to target specific tiger reserves. And we have seen this in case of tiger reserves of Madhya Pradesh, Vidarbha in Maharashtra, Chhattisgarh, Nagarhole, Satkosya, to give some examples. The other thing that happens is that sometimes the entire area is declared as insurgency affected, as we see in case of Chhattisgarh,
or certain communities which are completely, just codified into through a criminal lens. So I want to just give an example here. Last year, the Madhya Pradesh PCCF issued an alert against poaching, and it directed for conducting surveillance and raiding of the house of the communities belonging to the denotified tribes, such as the Pardi community. Um, there's a group working in Madhya Pradesh, Criminal Justice and Accountability, and they have been constantly writing submissions and sending letters. But you see that the letter itself is not taken into cognizance. So, to give this full-fledged free hand to go and raid the houses of a community who was historically criminalized and through law went and had a denotification. So it's sort of going back to the same criminalizing era that we had. Um, Similarly, we see that this sort of alert which we are seeing being issued by a certain PCCF of a certain state is not emerging from there. It's emerging from the larger frame that is used by the Wildlife Crime Control Bureau to frame certain communities, the Pardhis, the Gujjars, as poachers, with no evidence, obviously. A similar kind of a result of a similar kind of framing is what we saw in Kanha last year, where a Bega man was shot by the forest police, alleging that he's an Naxal. And it's only the probe was only done when there was a wide opposition from the obviously the local Sangatans as well as the political opposition. And finally, it was revealed that the man was not an Naxal, was just a local man entering. But what it also led into was that people who were living in that landscape had no idea that in inside core areas, paramilitary camps had been set up. So all of this encounter actually unfolded and unpacked the kind of expansion of these camps which has already been taking place in these tiger reserves. Another example of this militarized conduct that we are seeing is something called as Special Tiger Protection Force. It's established under the NTCA, but it's basically an armed unit which is dedicated to tiger reserves. It's obviously it's not there right now operating in all the tiger reserves. So one sees that certain tiger reserves which have been labeled as sensitive, high population reserves where there are more risk of some kind of resistance, STPF is being deployed. So we already have it in Pench, in Bandipur, in Corbett, in Kanha, Kaziranga, to give a few examples. Um, this STPF is basically, as per the law, is allowed to utilize tools such as drones, night vision equipment, GPS-based patrolling to monitor what the law would say is illegal activities or movement. But the question again comes is what is an illegal activity and what is an illegal movement and who decides that? Because if one were to follow the rights framework, collecting MFP is not an illegal activity. So who really is framing what a illegal activity is? Similarly, in Kaziranga, we see that there were some amendments introduced into the Code of Criminal Procedures to basically allow shoot-on-sight policy. And heavily enforced armed guards, forest rangers were vested with so much policing power. In 2015, I think more than 20 people were killed in these shootouts by forest rangers in Kaziranga. Majority of them being tribals, Adivasis. And in case of such shootouts and encounters and killings, no magisterial inquiries are done, no forensic report, no postmortems. In fact, Kaziranga has become the epicenter of this militarization. There have been a number of documented enforced disappearances that have happened in Kaziranga. Another example is for Jharkhand, Palamou Tiger Reserve. Already saying that it's a Maoist affected area, they allowed the use of armed guards and they said the guards are to protect both the wildlife and the staff. So immediately the entire population is being constituted as a threat. In Sariska and Panna Tiger Reserve, again, incidents of poaching, which is done by a much more, I would say, a corporate network of poachers, was used to increase the surveillance. And obviously, Achanak Mar and Udanti, I'm guessing Simanchal Bhai can tell more. But these two are also important because Chhattisgarh is one of the few states which has really struggled and fought for the recognition of rights inside core areas. And the rights actually got recognized. So the recognition of rights is now being labeled as a threat that we can't enter, and it's a difficult terrain.
So there are demands for cancellation of rights now that we are seeing. Another important technological tool which the NTCA uses in India is called M-Stripes. It's a monitoring system for tiger intensive protection and ecological status. But basically, it's an Android application, and it works. Again, it's used by the frontline staff to look into poaching and to help in tiger reserve management. But it also records and keeps this database of offenders. Another drone technology which is used, it's called UAV, unmanned aerial vehicles. It's a eBird technology for tiger conservation. Um, it's already operating in 13 tiger reserves. In the same way, it's used for drone-based surveillance of illegal activities in the tiger reserve. Adding further, there's another example of Odisha, which doesn't have a special tiger protection force, but something called as Armed Police Reserve. It's the only state and the only tiger reserve, Semlipal, to have something called as APR. It's a force. It has a 131 people cadre from different sub inspectors, inspectors, commandant, havaldars, and the intention is again that there is a rise of surgeons activity, and the APR should support the wildlife management. So the deployment of police or military or policing or military tools to aid in the wildlife management becomes a common norm. Um, in Kaziranga, also what one sees is something called a special rhino protection force. So which is centered around the protection of rhino. Yeah. So these are the example of some kind of armed forces which are already operating. But what we are also seeing lately is a push for or a demand from different states, chief wildlife wardens, to deploy STPF, to allow funding for STPF. Um, Now, this I think speaks to some larger questions, because conservation on its face doesn't seem as violent and as militaristic and as exclusionary as other forms of extractivism sort of gives the first impression. But there are multiple ways in which conservation relates to extractivism, and I just want to list them broadly. One is that I feel that the conservation territories plus the wildlife itself is a source of extraction or act as extractive machinery. How is that happening? Because that's a growing sector where we see that the wildlife, particularly these charismatic species, and their habitat is made into a spectre, a source of consolidating, control and capital over the landscape. It becomes a leisure activity. It becomes a tourism sector. It becomes a mean to earn revenue. So the growing push for safari and wildlife tiger tourism is quite there in India. In fact, each notification of tiger reserve comes with a political celebration of that, how the notification will result in upliftment of livelihoods, when in fact tiger reserve, as we were talking, completely operates in a different manner, where it is going to remove people from there. um, the continuing to this particular frame, I think the other way is that increasingly under this broader climate crisis, the push for carbon credits, carbon sinks, India is portraying its tiger reserve network, its protected area network, as a means of expanding carbon sink. There are a number of carbon credit projects which are being piloted in different tiger reserves. The third is the use of this conservation finance. There is a large chunk of global climate and conservation finance, and India, due to its expansive tiger network, expansive tiger numbers, is able to secure a sufficiently good proportion of this money. Um, and what's also happening is that in future, considering that it has such large number of tigers, it's now saying that we can provide tigers to other countries. Just the way cheetahs have been, introduced into India, India can help introduce tigers in other landscapes. So one sees that the tiger itself may become or is becoming a commodity.
The second way in which this conservation relates to extractivism is something called as offsetting, and I want to just dig a bit more into that. Um, that this aggressive expansion of protected areas and conservation territories, particularly tiger reserves, is deployed to legitimize the extraction happening outside these protected areas. So the legitimacy to diversions, mining, destruction of natural ecosystems, all is supposedly compensated if you notify a tiger reserve. Um, to give an example, I think what Pooja was also starting talking about, that a number of locations in Chhattisgarh we see that these are natural forests which are being cut. Uh, in fact, in Hasdeo, it became such a big movement that there was so much, spotlight on it, and we see that the state still is going ahead in violation of all the law and allowing for the felling of trees. While at the same time, in 2024, the state government notifies a tiger reserve called as Guru Ghatsidas Tamor Pingla Tiger Reserve, and constantly championing, saying that it's the third tiger reserve in the country. So Chhattisgarh is about to host the third biggest tiger reserve. Chhattisgarh is home to four tiger reserves. But Chhattisgarh is also using these four tiger reserves to sort of legitimize the cutting and felling of trees, the diversion of forest in other areas of Chhattisgarh. Um, so this is one example that I feel that it's being used to constantly compensate for the extraction taking place outside. And another example of this is the amendments that were introduced in the Forest Conservation Act of 1980. Law, originally at least in its name itself, deploys the word conservation. But Forest Conservation Act of 1980 till date has been used to allow the sanctioning of diversion of forest. And post these amendments in 2022, we see that it's consolidating much more control in the hands of the corporate and private players. So on one hand, we see that the state is coming with much more militarized techniques in the name of conservation. At the same time, it's diluting the legal policy architecture meant to ensure that the forests are not diverted and destroyed. The third kind of way in which conservation interlinks with capital and extractivism is the internal offsetting, where the same zones from where the state removes the people violating all law and notifies it into a tiger reserve or a core zone is being denotified or used as a transactional commodity. To explain this, let's look at the example of Madhya Pradesh, which has 9 tiger reserves. There's a tiger reserve in Madhya Pradesh called Panna. Panna lost all its tiger allegedly to poaching in 2000s. And there was a massive tiger reintroduction program. People were removed saying that, the habitat has to be safeguarded and protected in its pristineness for the tigers to survive. River interlinking project called Kane Betwa was proposed in Panna. To sanction this project means to allow for diversion and submergence of critical tiger habitat of Panna. It also means that the tiger movement within that tiger reserve will get disrupted. Now, to compensate for that, the state says it's okay. We will notify 3 more tiger reserves, one in UP, two in Madhya Pradesh. So it's become like a numerical fix, right? Uh, that let's cut the forest here and notify a tiger reserve there. And if this land, if we have removed people from the land is completely in the hands, consolidated in the hands of the state. The state is the same state which is the final authority to take a decision whether something will notified as a tiger reserve and whether something will be denotified. So what's notified eventually gets denotified, and that denotification is sort of equated by notification somewhere else. Which is kind of a very absurd logic, because then one understands that it's neither the science which drives the notification of tiger reserves in the country, it's neither the law, because you do not comply with the legal framework. It's basically extractive interest that one patch of land is needed for certain project, and to get that, you transform another land somewhere into a protected area. So to end with, I will just
just sum it up and say that the entire model, premise of the conservation model itself is based on the idea of policing. Uh, Policing lives, regulating lives. So there are overt ways in which it is militaristic, but there are also covert ways in which it is militaristic. And the larger idea of conservation in this country is that it serves as an economic and political tool by the state to maintain its hegemony over land, resources, and lives of the people. So I'll just pause here and hand it back to you, Pooja. Thank you, Aditi. It was very comprehensive. You've linked everything together. Yeah, that how conservation is also linked with extraction. It's another form of extraction. It's linked with militarization and everyday policing of people. And also, it justifies, even more extraction, like in the name of mining and development purposes. So thank you very much for that presentation. So now I will introduce Simanchal Bhai, Simanchal Achari. We also call him Simanchal Bhai. He works as a Samajik Karyakarta in Chhattisgarh. Samajik Karyakarta loosely translates as a social worker in English. Simanchal Bhai will share his own experience of working with Adivasi and forest dwelling people through a Sangathan, which means a grassroots organization in a tiger reserve area of Chhattisgarh. He will share about the everyday problems faced by people, how the state uses different tactics to harass people living in conservation areas in order to expropriate land. He will also inform us about how the Sangathan in Tiger Reserve is resisting the state's attempt to expropriate land and dispossess Adivasi and forest dwelling people from their customary land, forest, and habitat. सबको जिंदाबाद, जोहार। छत्तीसगढ़ में जोहार ज्यादातर चलता है। तो हम जहाँ आदित्य दीदी ने पूरा ये पॉलिसी लेवल कैसे हो रहा है, अभी कैसे स्थिति है, वो उसमें मैं थोड़ा बस फील्ड का जो एक्सपीरियंस है हमारा 12-15 साल का, जो हमारा एक संघर्ष है, और उसी संघर्ष में कैसे हम लोगों ने, मतलब हम लोग जिस इलाका में काम कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ का अचानकमार टाइगर रिजर्व है और मुंगेली जिला में स्थित है। वहाँ आप, मतलब ये एक ऐसा है कि स्थिति है, जैसे आप पुलिसिंग का बात बोले हैं या फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी का बात किए हैं, तो ये जो पूरा इलाका है ये एक पीवीटीजी से है, जो बैगा जनजाति का कहलाते हैं, और ये विश्व में विरल जनजाति है, और धीरे धीरे इसको विलुप्त करने की एक उनके ऊपर साजिश किया जा रहा है। एक तो पहले इनके साथ ऐसी हुआ कि ये लोग जूम कल्टीवेशन करते थे और उसी इलाका को पहले सेंचुरी घोषित किए 1980 के आसपास। उसके बाद धीरे धीरे उनको 90 दशक के आसपास उनके जूम कल्टीवेशन को खत्म करके, उनका पूरा कल्चरल राइट को खत्म करके उनको नीचे लेके आ गए। और क्योंकि ये फॉरेस्ट विलेज था, तो फॉरेस्ट विलेज के नाम से उनको एक मतलब लीज में 5 एकड़ का एक कागज दिए थे, और उनको ये कागज से कोई मतलब नहीं था, और वो अपना केवल जंगल में पूरा डिपेंडेंसी था, जो आजीविका। और धीरे उनका एक ऐसी है कि उनका जो हैबिटाट है वो टाइगर की हैबिटाट के साथ सिमिलरिटी है, क्योंकि जहां तक टाइगर जाता है उनका आजीविका सस्टेन करने के लिए, वैसा ही वो जनजाति है, वो उनके जहां तक आजीविका का है साधन वहां तक जाते थे। इस बीच में फॉरेस्ट राइट एक्ट आया 2004 में, और पेशा भी आया तो पैसा लागू नहीं हुआ 96 के बाद। पंचायत राज आया 93 में, पंचायत राज अधिनियम आया, परंतु वहां इलाका में ग्राम सभा भी नहीं हो रहा था। इसके बाद जब 2009 में ये टाइगर रिजर्व घोषित हुआ, तो तुरंत इवेक्शन, जो मेरा अच्छा से याद है हम लोगों का, वो जो बैगा जनजातियों का 6 गांव को आधा रात में पूरा शेल्टर बैला बैला गाड़ी में वो लोड करके, उनको पूरा कुछ शेल्टर बना नहीं है, ऐसे ही काला पन्नी में तंबू डाल के उनको आधा आधा रात को निकाल दिए बैला गाड़ी में। तो उसमें बहुत सारे लोग मर भी गए हैं, मतलब जो बुजुर्ग लोग थे और थोड़ा बुजुर्ग दीदी लोग थे, तो कुछ लोग डेथ भी हुआ है, पर उसको बहुत स्ट्रिक्टली वो अंदर में जाने नहीं देते थे, बहुत स्ट्रिक्टली किए थे।
तो उसके बाद 2009 के बाद जब ये लोगों का डिस्प्लेसमेंट किए इन लोगों को, उनको लगा कि ये बहुत बड़ा मतलब उनके साथ बैगा जनजातियों के साथ डबल रिलोकेशन जैसा काम हो रहा है। पहले डोंगर से उतार के नीचे लाए, फिर इनको ले आए, जबकि उनकी आजीविका जंगल के अलावा बाहर नहीं है, वो आजीविका को वो जानते नहीं है। तो हम लोग देखे कि उनका जो कल्चरल राइट, ट्रेडिशनली जो कल्चरल राइट्स था, उनका जो प्री एग्रीकल्चर राइट्स था, वो धीरे धीरे उनको खत्म करके उनको खत्म कर दिए। जैसे एफआरए आया, एफआरए के बाद 2006 में जब वो एफआरए आया, एफआरए के बाद जब ये इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद वहां उनकी ऐसी बैरिकेटिंग कर दिया गया, 996 मतलब रेडियो किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर रेडियस में उनको पूरा बांध दिया गया, चारों तरफ से अलग अलग बैरिकेड कर दिया गया। और कोई भी मान लो गांव के अंदर से जाता है तो उसकी पूरा आईडी प्रूफ चेक किया जाता था। और इतना उनको बांध दिया गया कि उनको 2011-12 के बीच में बहुत दिक्कत हुआ। इवन उनकी बेटी रोटी जो शादी का है, या आज उनके कोई घर में बच्चा पैदा हुआ है या कोई डेथ हो गया है, तो बाहरी लोग कोई नहीं जा पाता था उनका रिलेशन का। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा बड़ा एक घटना घटा। और दूसरा उनको फिर ये किए कि उनका जो एनटीएफपी कलेक्शन होता था ना, वो एनटीएफपी कलेक्शन को उनको करने नहीं दिए। तो एक तो एग्रीकल्चर को बंद कर दिए, दूसरा इनकी राइट्स का पूरा उनका जो कल्चरल राइट्स को बंद कर दिए, तीसरा इनका एनटीएफपी को बंद किया। अब जिंदा रहेंगे कैसे वो लोग? चौथा ये कि वहां ग्राम सभा को रोक दिया गया, और गवर्नमेंट का जो स्कीम भी बंद कर दिया गया। मतलब 2011 से 2014 उनका कुछ और उनकी अस्तित्व के बाहर हो गए। तो उनको लगा कि अभी करे तो करे, क्या करे। तो इस बीच में फिर हमने देखे कि भाई अब क्या कर सकते हैं। तो कुछ युवा साथी है वहां जो पढ़े लिखे 10वीं 12वीं पढ़ रहे थे, तो उन्होंने एक अच्छा उनको कैसे पता चला, हमने क्योंकि वन अधिकार के ऊपर हमने काम कर रहे थे, तो उनका साथ हमारा एक कांटेक्ट होने के बाद, तो जो उनके साथ एक सांगठनिक प्रक्रिया शुरू करके कम्युनिटी रिसोर्स राइट को, उनको इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट से कोई नहीं है, उनका जो आजीविका सस्टेन करता है वो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट करता है। और वो पूर्वजों से अपना प्री एग्रीकल्चर को और जो जूम कल्टीवेशन करते थे, और उनका साथ दो उनके गोत्र के साथ सभी सारे जानवर और पंखियों का साथ जो उनका को रिलेशन है, उनको डॉक्यूमेंटेशन करके वो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट को कम से कम 4 साल लड़ाई लड़े, और 2018 तक। 2018 के बाद उनके साथ अलग अलग वन विभाग ने अलग अलग प्रक्रिया का अलग अलग उनके साथ टॉर्चर करने लगे। पहले क्या किए कि एक ऐसी इवेंट किए, मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक गांव गांव का नाम निवास खार है, ये कोई दिक्कत नहीं, एक कोर्ट में भी केस हुआ है। और निवास खार में लोगों ने क्या किए थे, अपना गए थे आजीविका के लिए, जंगल गए थे, और वो कुछ महुआ उठा के ला रहे थे, तो वो एक टांगिया पकड़े थे। और वो टांगिया के आधार पर उनको 19 लोगों को वो केस दर्ज कर दिए, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एनटीसीए के तहत केस दर्ज कर दिए। अब लोगों ने बोले हमारा क्या गलती है, कोई तो हम गलती नहीं है। और कैमरा ट्रैप के आधार पर उनको बोले कि भाई आप ये सारे चीज मतलब जानवर को मारते हो बोल के, क्योंकि धनुष तीर टंगिया ये सब उनकी धरोहर है, उनकी देवी देवता को मानते हैं वो लोग। इस केस को लेके उनके गांव में महिलाओं को बहुत मार मारे। ये पूरा पुलिस फोर्स जाके उन्हीं 19 लोगों के साथ साथ पूरा गांव वाले को मारे। तो थोड़ा आदिवासियों के उसी संगठन जो हमारा था, तो उनको लगा कि ये बहुत गलत हो रहा है हमारा साथ। तो उन्होंने क्या किए, उनको पूरा घेर लिए, और घेर के बोले कि भाई हमारा गलती क्या है, आप यहाँ साबित करो, नहीं तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि वो भी 20 गांव का लोग थे, बहुत बड़ा एक प्रोटेक्शन कर रहे थे। तो उसके बाद वहां कलेक्टर, वहां मिनिस्टर लोगों का आने का, वहां आप यहाँ आना पड़ेगा, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारा आदिवासी का ग्राम सभा, हमारा कानून यही चलता है, क्योंकि ये पेशा इलाका है, तो हम यही ग्राम सभा करेंगे। तो उसके बाद वहां कलेक्टर आए, डीजीपी आए, डीएफ सब लोग आए। उसके बाद ये समाधान निकला कि एक्चुअली उनका गलत नहीं था, ये उनके बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। तो उसके बाद उन्होंने अपना सरेंडर किए। सरेंडर करने के बाद इन्होंने बोले हम नहीं छोड़ेंगे, हम जब प्रोटेक्शन कर रहे थे तो आप मान लो ऐसे किए, तो हम आपको एट्रोसिटी करेंगे। तो फिर उस जो डिप्टी रेंजर था, उनको डिप्टी रेंजर को एट्रोसिटी हुआ, एट्रोसिटी होने के बाद उसको सस्पेंड हुआ।
उसके बाद वहां उनको लगा कि नहीं नहीं, हमारा अधिकार यहाँ बचा है, जिंदा है, हम इसको कर सकते हैं। तो फिर 2018 के बाद एक बहुत बड़ा एक संगठन बना 19 गांव का, अचानक मार टाइगर रिजर्व संघर्ष समिति, वो लोग आदिवासी लोगों ने अपना ये लोकल संगठन बनाए और कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट ग्राम सभा के थ्रू हम लेके रहेंगे। तो उसके बाद 2000 ये प्रोसेस स्टार्ट किए तो वन विभाग ने तैयार नहीं हुआ, ये पूरा एडवोकेसी स्टेट लेवल तक एडवोकेसी हुआ। उसके बाद 2008 18 के बाद थोड़ा स्पेस खुला। इसी बीच में क्या हुआ, उन्होंने वन विभाग ने क्या किए, इनको गलत साबित करने के लिए एक धनुष बाण का प्रतियोगिता किए। धनुष बाण का प्रतियोगिता करते हुए वही आदिवासी को बुलाए और बुला के प्रतियोगिता किए। बढ़िया वो एक प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम के बाद दूसरे दिन उनको नक्सली घोषित कर दी जो लोग उसमें थे। तो ये लोग पेपर पढ़ के देखे तो गांव वाले, क्योंकि वहां नेटवर्क इलाका नहीं है और कनेक्टिविटी भी नहीं है, तो 3-4 दिन बाद वो पेपर वहां पहुंचा। जब लोगों के कुछ तो पता चला कि हमको तो नक्सली घोषित कर दी ये लोग, आत्मसमर्पण करने के बाद बोले। तो इस बात को लेके फिर संगठन ने लड़ा और लड़ने का बाद ये ऑन रिकॉर्ड पूरा उन्होंने माफी मांगे। विभाग ने माफी मांगा, ये हमारा से गलती हुआ। उसके बाद 2022 में हमारा पूरा 14 गांव को कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट का मिल गया। जब वो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट मिला तो लोगों को लगा कि हमारा अधिकार अभी भी जीवित है और हमको आगे जो हम कर रहे हैं उसको करना पड़ेगा। इसी बीच में वो लोग क्या किए कि यहाँ कवर्धा को लगा हुआ है, अचानक कवर्धा में वहां एक बक्साइट माइनिंग था। वो बक्साइटिंग माइनिंग एरिया में भी बैगा लोग निवासरत थे। उनको उठा के इनकी बफर जोन में रखा और बफर जोन में ये क्या कर रहे थे कि बफर जोन में ला के तो बैठाया। तो उसी समय ये क्या कर रहे थे ना, हाथ जैसे हसदेव, आदित्य दीदी ने इसमें थोड़ा फोकस डाले हैं। जैसे हसदेव का जंगल कटने लगा तो वहां का जो हसदेव में जो हाथी थे वो माइग्रेट होने लगे जिस इलाका में ज्यादा पौधा था और जिस इलाका में उनको अच्छा था। तो वहां का इलाका जब हाथी आए इधर तो वहां बहुत बड़ा जो इलेक्ट्रिक लाइन गया था ऊपर में, मतलब खुदा ना खासा वायर गिर के वो हाथी मर गया था। और वो हाथी मरने का बाद उन्होंने क्या किए, गलती उनका है और गलती इसको डाल दी है आदिवासियों की, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ गलती दिखा के उनको केस दर्ज करके उनको मारना था। बस इतना उनका हर दम हर 2 महीने में ऐसे करते थे। तो उसके बाद ये निकला कि हम लोगों ने उसको पूरा हुआ। होने के बाद पूरा कलेक्टर कलेक्टर की एक कमेटी बन के एटीआर संघर्ष समिति के साथ फिर वो देखा गया कि वो गलत नहीं था। और वो संघर्ष समिति का वनाधिकार कमेटी का एक विश्वम्बर भाई थे और गांव सरगड़ी का गांव का, उनके उनको इतना पीटा वो मतलब बाहर है। तो वो मतलब डेथ जैसा है। उसके बाद उनको लेके हमने ये सारे चीज केस एफिडेविट किए। केस एफिडेविट करने का बाद फिर यहाँ एक अलग संगठन है, उनके साथ हमने बात की, जो सर्व आदिवासी समाज है, उनसे बातचीत करके ये एक मोटिव बना और वो केस होने के बाद वो भी ऐसी हर हरकत में ऐसे करने लगे। तो ये जो एक बड़ा हमारा साथ हो रहा था, जो बैगा का साथ है, ये धीरे धीरे उनको अलग एक दिशा में ले रहे थे। और इनका जो पूरा डिस्प्लेसमेंट का जो बात है, और डिस्प्लेसमेंट करने का बाद आज वो 6 गांव में लोगों को ऐसी स्थिति में है, एक गांव का कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि जिला अलग हुआ, एक जिले सर्टिफिकेट को दे दिए है, दूसरे जिले जमीन दे दी, वो लोग पूरा परिवार आज उनके कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनको गायब कर दिया गया है। और जो 3 गांव का बात हम कर रहे हैं, उनको हम लोग देख रहे थे कि उनकी सारे चीजों को, ऐसा कोई एक चीज नहीं है आज वहां उनका कोई आजीविका का स्रोत नहीं है। बस राशन कार्ड दिए है, वो भी गिरवी हो गया है। तो ये जो उनके साथ हो रहा है, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और अभी और भी करने की उनको कोशिश कर रहे हैं। और जो वो बात हो रहा था कि उनको जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में सेक्शन 38 में कहा गया है कि भाई वॉलंटरी रिलोकेशन है, तो वॉलंटरी रिलोकेशन का नाम ही नहीं है। एवरी ईयर वो लोग क्या करते हैं ना, एक सादा पेपर में आप ऐसे ही साइन ले लेते हैं परिवार में घुस घुस के। और वो क्योंकि वो लोग गांव में आजीविका की ये में रहते हैं दिशा में, तो वो लोग वो समझ नहीं पाते हैं ये क्या लेटर आया है। और उनको शायद वहाँ बीएसएस तो नहीं है, और वहाँ वो है ईडीसी है, इको डेवलपमेंट क्लब है।
वो उनके माध्यम से इको डेवलपमेंट क्लब बना के उनके माध्यम से उनको क्या करता है, वो सारे चीज साइन ले लेते हैं। और अभी हमने जब से संगठन बना 2022 के बाद, ये पूरा हम लोगों ने पूरा हमारा जो संगठन जहां तरफ मजबूत है 12 गांव में, वो 12 गांव में ये तो प्रक्रिया नहीं कर पा रहे। परंतु जो गांव में काफी इंटर एरिया में है और जो बड़ा गांव नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का ग्राम की आप गांव का परिभाषा देखेंगे तो पारा टोला माजरा को भी गांव बनाया जाता है। तो जहां 25 परिवार है, 12 परिवार बैगा है, वहां जाना भी संभव नहीं है। और हम लोग जैसे जाते हैं तो उनकी जो बैरिकेड है, उनका हर बैरिकेड में आपको एक एक रसीद काट के जाना पड़ेगा, और आप क्यों जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, और आप क्या काम के लिए जा रहे हो, वो आपको बाकायदा आपको बताना पड़ेगा। तो इसके बाद जैसे ये सारे हुआ, तो ये जानवर को खुद मारते थे। और केस मतलब वो आदिवासियों के नाम, जैसे आप यहाँ जो पूरा अचानक बैगा है, गौंड भी है, उरांव भी है, अलग जनजाति लोग भी, ज्यादातर बैगा है। और गौंड और उरांव जनजाति भी यहाँ निवास करते हैं, और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डुएलर्स भी है। तो अब इनको ये एक है, इनको पूरा ऊपर से इंस्ट्रक्शन जो पीसीसीएफ सीसीएफ बोलते हैं, और उनसे पूरा इंस्ट्रक्शन है कि कैसे भी हर साल 2-4 केस ऊपर करवाओ। तो वो क्या करते हैं, लकड़ी खुद कटवाते हैं। जबकि हम लोग देखेंगे तो पूरा इलाका में 35% इलाका में कॉरपोरेशन का टीक का पौधा वहां लगाया गया है। जो जब टीक का पौधा लगाया गया है, टीक के पौधे के नीचे घास ही नहीं उगता है, तो वहां हिरण नहीं रहेगा तो शेर कहाँ से आएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये लोगों ने जाके डीओफओ को समझाए। आपने ये जो पौधा काट के, हम ट्रेडिशनल पौधा काट के ये जो टीक का प्लांटेशन कर रहे हैं इतना बड़ा इलाका में, ये शरारत गलत है, हम करने नहीं देंगे। तो उन्होंने लकड़ी काटे थे, रेंजर ने लकड़ी काट के उसको वो खुद कहीं दूसरे जगह भेज रहा था। तो हमारा एक वन अधिकार समिति का अध्यक्ष है, उन्होंने उसको ग्राम सभा के थ्रू उसको पूरा जब्त किया। और जब्त करके पूरा वन विभाग के नाम से एक वन अधिकार कानून के सेक्शन 5 को यूज किया, और सेक्शन 5 और सेक्शन 10(3) को यूज करते हुए उनके नाम से एफिडेविट सीधा जाके एफआईआर किए। तो तब पता चला कि वन अधिकार कानून, ये अचानक मार टाइगर रिजर्व हो या है कहीं भी हो, ये सेक्शन 4245 के तहत ये तो लागू होता है। तो उसके बाद लोगों के मन में ये आया कि नहीं, ये जंगल हमारा है, हमारा था, और हमें आगे इसको तो रखना पड़ेगा। अब इसके बाद जैसे लकड़ी का ये वाला लकड़ी का केस आया, फिर एक हिरन का केस आया। हिरन का केस को मारा कौन है, डिप्टी रेंजर को बेटा का मारा है, और नाम किसका है, बेटा का नाम है। ये कैसे हुआ, और मारा तो वो लोग गांव वाले बोले हम जानते ही नहीं है। तो फिर ऐसी अलग अलग प्रकार का जब केस करते गए, तो ग्राम सभा, हम लोगों ने ग्राम सभा के थ्रू ये सारे चीजों को, अपने बाउंड्री को, जो ट्रेडिशनल बाउंड्री था, उस बाउंड्री इलाका में बोर्ड गाड़ने लगे, पूरा अपना अपना इलाका में। अब वो लोग पूरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत तो अलग बात है, ये अपना जो ट्रेडिशनल था, पारंपरिक, जो पहले से आग जलने नहीं देते थे, कि कोई जानवर कहाँ जा रहा है उसका गतिविधि उनको पता था। और ये सारे चीजों को ये लोगों ने अपना रिकॉर्ड अपने गांव में ग्राम सभा में रिकॉर्ड मुक्त किए। उसके बाद जब डीओफओ ने डिस्प्लेसमेंट का बात की, तो जब हमारे को कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट मिल गया है, तो हमने क्यों डिस्प्लेसमेंट का हम लोग होंगे, ये जो सवाल है, अभी ये लड़ाई है। ये लड़ाई लगातार उन्हें हम प्रेशर डाल रहे हैं। और जो जहां डिस्प्लेसमेंट करने के लिए जगह दिखा रहे हैं, वहां जो जगह में जंगल था, उस जगह को पहले ये लोग घर बनाने के लिए साफ किए। 3028 ऐसा कुछ पौधा है, हम गिनती किए थे उसका, वो जो पौधा काटे थे। तो हमने प्रश्न किए कि भाई, हम जब जंगल में रहते थे, आपको हमारा अनुकूल हिसाब से बैठाना चाहिए, तो आप इस पेड़ को क्यों काट रहे हो। फिर ये पेड़ काट रहे हो तो किसकी अनुमति में काट रहे हो। तो अब ये पेड़ जाएगा कहाँ, ये तो डिपो में जाना चाहिए। वो डिपो में ना जाके उसको कहीं दूसरे जगह में वो वायलेशन करके भेज रहे थे, उस लकड़ी को भी फिर जब्ती किए। तो ये जो प्रोसेस है उनके साथ पूरा किया जा रहा है। और वहां अभी ना लाइट है, ना टावर है, ना कहीं जाने आने का कोई सुविधा है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। परंतु हमने संगठन के माध्यम से एक ये कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट आने के बाद, हमने मनरेगा के, क्योंकि मनरेगा डिमांड आधारित है, तो हमने मनरेगा डिमांड आधारित था तो मनरेगा किए। तो अभी मनरेगा में उनको काम मिलना शुरू हुआ है। और पहले क्या था कि वहाँ हाई स्कूल नहीं था, 35 किलोमीटर रेडियस में एक भी हाई स्कूल नहीं था। और वहाँ स्कूल
उसके बाद हमने पंचायत राज अधिनियम की 1993 की ग्राम सभा का मांग किए। ग्राम सभा अडॉप्ट करवाया क्योंकि ग्राम सभा क्लोज हो गया था। ग्राम सभा जब आया तो फिर हमने WLPA की जो 1972 की सेक्शन 38 का भी का हम लोग यूज किया। उसके बाद हम LRA आया। LRA में क्योंकि ये लोग LRA का बात नहीं करते हैं, तो LRA 2013 का जो मुआवजा है, उन्होंने बोल रहे हैं कि LRA यहाँ लागू नहीं होता है, वो राजस्व गांव में लागू होता है। जबकि बनग्राम की राजस्व गांव 2014 में वो डिक्लेरेशन हुआ है, उसका नोटिफिकेशन हमारा पास है, हम उसको निकाल के रखे थे। तो हमने जो CCF और PCCF से बात किए कि भाई ये 2013 ये राजस्व गांव में आप ही बोल रहे हो, ये देखिए राजस्व गांव का हमारा काम कागज है। तो ये और क्या बोल, जो NTCA का जो गाइडलाइन के हिसाब से जो 10 लाख का मुआवजा अभी जो बढ़ा हुआ है, 15 लाख का मुआवजा का ही बात कर रहे हैं। अभी हमारा साथ अलग ये खेल खेल रहे हैं कि मुआवजा जो दिया जाएगा, रिलोकेशन होगा कोई, तो वो एक जो उनकी घर का बुजुर्ग है उनको ही जमीन मिलेगा, बाकी लोगों को उनको कैश दिया जाएगा और वो अपना बाप के घर में रह जाएगा। मतलब वो इनके पास लैंड लैंड का जो धीरे धीरे जो कॉन्सेप्ट है, ये अलग अलग जगह पे टाइगर रिजर्व बना के और लैंड को एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं। इसमें पर्यावरण मतलब वो क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, जैसे टूरिज्म जी। की बात ही करते हैं। यहाँ आपको काम मिलेगा, टूरिज्म होगा तो लोग आएंगे तो आपको काम मिलेगा और आप दुकान करेंगे। तो ये सारे चीजों में उनको अभी उलझा के रख रहे हैं। पर संगठन ने बोला है ये सब करना, हमारा ग्राम सभा जब तक आपको वो अधिकार नहीं देगा, आप टूरिज्म नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ अभी हम लोगों ने लीगल प्रोसेस में जा रहे हैं, क्योंकि कई सारे अड़चन आ रहे हैं, तो हम लीगल प्रोसेस में जाने की लोगों ने कोशिश कर रहे हैं। फिर भी हमारा 3 गांव को अभी विस्थापन करने के लिए वो लोग, क्योंकि अंदर वाला गांव है, तो अभी भी उनको टॉर्चर कर रहे हैं। उनको बोल रहे हैं आप नहीं जाओगे तो हम आधा रात को उठा के पुलिस तो छावनी है अभी, आधा रात को हम निकाल देंगे, आपको कौन क्या रखेगा देखेंगे फिर। तो हमने कोशिश कर रहे हैं कि ये संघर्ष को और आगे लेने के लिए, और अभी तो संघर्ष जारी है। अभी हमारा मतलब हम लोग अभी कंजर्वेशन में उतरे हैं। हम लोग फायर प्रोटेक्शन कर रहे हैं एवरीडे। और हमारा मतलब कच्चा पेड़ गिनती हो रहा है। कच्चा पेड़ काटने का मना है, कोई एनक्रोचमेंट नहीं करेगा। और हमारा ट्रेडिशनल जो हम पहले सीड्स को लेते थे लघु वनोपज को, वैसे ही हम लेंगे लघु वनोपज को, लघु वनोपज लेना शुरू किए हैं। हाँ, परंतु हमको अंदर में बेचने नहीं देते हैं, बाहर में ही बेचने के लिए बोलते हैं। ये सारे चीज हमने कंजर्वेशन पार्ट में आके उनको दिखाए कि हमारा वहाँ अभी निकला है कि टाइगर जैसे जैसे कंजर्वेशन कम्युनिटी ने किया है, तो टाइगर का इधर आना शुरू किया है। तो जब हमारा कभी भी अभी तक कोई भी जानवर के साथ कोई आदिवासी का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो ये हम प्रूव करके जब उनको दिखाए, और हमारा साथ वो अलग प्रकार का बात कर रहे हैं कि भाई आपको हम ये सब कम्युनिटी मैनेजमेंट करने नहीं देंगे। तो अब ये लड़ाई अभी कंटिन्यू है, और हम अपना मैनेजमेंट तो कर ही रहे हैं, जो ट्रेडिशनल पद्धति में पहले हो रहा था वो चल रहा है। हम्म। हाँ। जो अभी अभी जो पुलिस मतलब उनको कैंपा का जो पैसा आता था, तो कैंपा की पैसा में कई सारे लोगों को डिप्लॉयड किए हैं कि एक फायर वॉचर के नाम से डिप्लॉयड किए हैं। और वो लोगों ने पूरा गांव वाले को बांध के रख देते हैं कि आप इस इलाका में, जिस इलाका में उनका NTFP मिल रहा है, उस इलाका में उनको और जाने देने में परेशानियां कर रहा है, क्योंकि वहां जानवर है, वहां का दिक्कत होगा, आप नहीं जा सकते हैं। तो वो ये एक किए है। दूसरा एक अभी वो लोग टेक्निक, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कोई कानूनी तरीके से लोगों को दिक्कत नहीं कर पा रहे, वो फंस जाते हैं। परंतु वो लोगों ने अभी FRA कर लेके, क्योंकि आदिवासी का पूरा जो कंसिडर है वो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट के कंजर्वेशन के ऊपर है। हम जंगल को सुरक्षा करेंगे और संरक्षण करेंगे, समर्थन करेंगे। परंतु जो माइग्रेट हो के जो OTFD का कुछ लोग बाद में गए हैं वहां, अब जो माइग्रेट लोग गए हैं वो सब यादव जनजाति का होते हैं जो गाय चराते हैं। तो वो लोग क्या किए हैं, और एक समाज है पाइका समाज है, तो वो लोग सब वो OTFD में आते हैं। और OTFD पूरा अचानक हमारा टाइगर रिजर्व में वो एक माइग्रेटेड फैमिलीज है जाके रुके हैं। और उनको जब वो माइग्रेटेड का बात करेंगे तो कम्युनिटी वन अधिकार कानून में
आईएफआर का लैंड का जब बात करेंगे तो उसमें कट ऑफ डेट है। उसमें कट ऑफ डेट में आदिवासियों का 13 दिसंबर 2006 है, 5 है। परंतु इनका तो 3 पीढ़ी का मांग रहा है। तो इनको ये बोल रहे हैं कि भाई आप यहाँ रह के क्या करोगे, आपको तो जाना पड़ेगा। यहाँ तो आपका जो काबिज किए उसका लैंड का कानून के तहत आपको मिलेगा भी नहीं। तो आपने चले जाइए, हम आपको कंपनसेशन एनटीसीए के तहत दे देंगे। तो आप यादव समाज है तो बैगा समाज के ऊपर वो थोड़ा दबाव डालता है, मतलब उनको डिस्क्रिमिनेट होते हैं वो लोग। जो बैगा, गौंड, उरांव जनजाति है, ये जो जनजाति, दो जनजाति है, पाइका और यादव लोग, उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि भाई आपकी वजह से हम जा नहीं पा रहे, हमारा परिवार परेशान हो रहे हैं, तो आप, हम तो चले जाएंगे। तो अब ऐसी स्थिति में विधानसभा, उनका जो एक बड़ा सवाल हुआ था, एक बहुत बड़ा घटना हुआ, हम लोगों ने उसको रेकर को जो पढ़े, तो फिर वन विभाग ने अपना इस बात को से भी नीचे उतरा। आपको बता दूं, 16 अगस्त 2025 को विधानसभा में, मतलब यहाँ का स्थानीय जो विधायक है वो क्वेश्चन किया। उन्होंने बोला कि भाई ये बताओ वन वन मंत्री, आपका डिस्प्लेसमेंट को लेके क्या रणनीति है। तो उन्होंने बताया कि हमारा वहां का मतलब सभी गांव हमको दे दिए हैं, 10 गांव बस बचा है, सभी गांव का ग्राम सभा दे दिए, जबकि कोई गांव में सभा नहीं दिए थे। 17 तारीख को जिला जिला का प्रशासन से ग्राम सभा के लिए लेटर निकाल रहा है कि ये विस्थापन किया जाएगा, आपका ग्राम सभा का प्रस्ताव लीजिए। जब 16 तारीख को आप विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हो कि दे दिया गया है, तो फिर 17 तारीख को ग्राम सभा का निकालना कौन सा औचित्य है। तो ये सवाल क्या किए लोगों ने, संगठन ने ये सवाल किया कि ये सब कैसा राजनीति हो रहा है। तो लोगों ने, वहां ग्राम सभा हुआ, ग्राम सभा ने, लोगों ने विरोध किए, लोगों ने बोले कि हम साइन नहीं देंगे। तो वहां वो पूरा प्री प्लान किया था ओटीएफडी को साइन करवाने के लिए। परंतु वनाधिकार कानून का तो पूरा स्पष्ट है, जब तक ग्राम सभा का 50% कोरम नहीं होगा, तब तक वो ग्राम सभा का मान्य नहीं किया जाएगा। तो वहाँ जो 25-30 परिवार थे, वो जो 100 लोग है उनका वोटर है, कि वो गांव तो 500-600 गांव का है। तो वो लोग ये पैंतरा खिलाते हैं कि कोई ना कोई एक मुहिम खड़ा के ले जाएंगे। परंतु अभी ग्राम सभा इतना सशक्त है, जो 14 गांव को मिला है, उस 14 गांव को कुछ नहीं कर पा रहे। परंतु बाकी जो 6-7 गांव बचा है, छोटे छोटे हेमलेट है अंदर में, वो बहुत मतलब अंदर का गांव है, वहां जाना हमारा भी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। मतलब आपको गाड़ी एक बार खराब हो जाएगा, हम भी परेशान हो जाते हैं। तो वो थोड़ा सा उनको अभी परेशान कर रहे, पूरा दिन रात परेशान करने में लगे हुए हैं। परंतु हमने अपना सामाजिक स्तर पर जो रिलेशन है बेटी रोटी का, तो वो जाके एक मोबिलाइज करते हुए 2 गांव का कम्युनिटी रिसोर्स राइट का एसडीएलसी में हम जमा कर दिए हैं। तो अब लड़ाई अभी तक जारी है, यहाँ तक मैं रहूंगा। थैंक यू सीमांचल भाई, आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि असल में जो अचानक मार में किस तरह से चीजें हो रही हैं। वेरी थैंक यू टू सीमांचल भाई फॉर टेलिंग अस हाउ थिंग्स आर अनफोल्डिंग इन अचानक मार टाइगर रिजर्व. It is very important to have some perspective from the people who are living in the grassroots and fighting at the grassroots level, along with the broader patterns of how conservation is unfolding in India. So thank you again to both Aditi and Simanchal Bhai. Now we'll move on to the question and answer session. So what are the center state dynamics in the governance of these national parks? Role played by state government, specifically in Maharashtra, in the governance of these areas, given its relative and so-called success rates in recognition of the FRA and PISA. Thank you. And so I think the question itself has 2-3 sub-questions. And before I go to Maharashtra specific, because I think what you're trying to ask is how's the federal relation, right? How the center and state Yeah. relates Hmm. within this broader Tiger Reserve thing. It's Yeah. interesting because see all the kind of formulations and monitoring, framing of guidelines. So giving that framework emerges from NTCA. So that all that broader policy framing, monitoring emerges from NTCA. Even this example of this letter, for example, where the NTCA is directing state governments to expedite relocation for tiger conservation. But what happens is when you go to the NTCA, questioning this, questioning the legality of it, the NTCA immediately transfer its responsibility to the state, saying we are just a monitoring agency. The state is the implementing agency.
Now, even in the notification of Tiger Reserve, the proposal comes from the state, but the final approval is given by the NTCA. The NTCA requires that the state submits something called as a tiger conservation plan for each tiger reserve. If the plan is not in place, how is the tiger reserve operating as per the law? Because the law mandates that a plan should be there. Who is in charge for monitoring whether a plan is in place or not, whether the voluntary relocation has abided by the due framework given by the NTCA? All of that falls back to NTCA. But that's been the usual conduct in which NTCA would abdicate its responsibility to the state. To the extent when this letter came in 2024, a number of groups have been writing to the central government. And every time a letter goes to the central government or another constitutional bodies directing the NTCA to provide data, NTCA is just saying that we don't have any information. Now, it's interesting because it's the same NTCA which has the information when it comes to the number of villages which should be relocated, right? So you have that record. But when your citizens ask you, what is the record of the rights recognized in the 64,801 families? It says that it's the state's responsibility. So it's a responsibility of convenience and governance of convenience, but the center is very much the final authority overseeing. So the center cannot say that I am not responsible. However, that's the way it's operating. Now coming to the second part of Maharashtra, and I think it's a very important question, because when one thinks of Maharashtra, and particularly the Vidarbha part, which for some people is the Gadchiroli, Gondia region, the region which is adjacent to the Madhya Pradesh Telangana border. Now, Gadchiroli and other these districts have constantly been the pioneers of FRA implementation, right? The recognition of rights has happened to the extent where in Gadchiroli one sees that Gram Sabhas have formed a federation and are governing their landscape. When you compare this with the state of protected areas in Vidarbha, it's a very contrasting picture. The same Vidarbha landscape houses 5 tiger reserve. So in popular discourse, a city called Nagpur is called the tiger capital, just as Madhya Pradesh is called as the tiger state. Tiger capital in the sense that, just from a very tourism perspective, that it's the center of so many tiger reserves. But the process of recognition of rights in these tiger reserve has been extremely laggard. In fact, just when this order was passed in 2024, 38 families from a tiger reserve called Tadoba Andhari Tiger Reserve, TATR, were writing to the central ministry saying that we are being forced to relocate. We don't want to. And the tribal ministry has to intervene, to halt the relocations. So that was the state pressure. Very interesting, TATR is also a tiger reserve which runs parallel to the mining area. So half of the tiger reserves buffer zone is where mining is taking place. So this logic of conservation itself operates very differently. Even if you look at the landscape where in non-conservation areas, rights recognition may be advanced, but when it comes inside, the tiger reserve boundaries, a different kind of governance starts to operate. Just one quick point that I also want to make, something which we have not covered today, but in 2002, Wildlife Protection Act was amended to introduce 2 categories called community reserves and conservation reserves. Seemingly appeasing categories, because at first they might give you an impression it's participatory. They are state and private controlled, but the state has used it very strategically. If one were to look at the northeast landscape of this country, you will see an abundance of community reserves being notified. And I'm not going to go into that, but it's broadly the 6th schedule, 5th schedule area. So the state cannot operate in the same way. So it finds this appeasing category, to maintain its status quo. As compared to Vidarbha, where the state has notified a number of areas as conservation reserves. Now, these reserves are notified in between 2 tiger reserves. So what it helps you in doing is that you will say that a tiger will move from one tiger reserve to another. And to secure the area in between, let's create these stepping stones, smaller protected areas. And they will not act
in the same manner as Tiger Reserve, but ultimately it's regulated, right? The accessibility, the usage, everything is regulated. इस पे सीमांचल भाई, आपको अगर कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। जब हम लोग देखते हैं कि एनटीसी सेंट्रल, तो अभी आया। हाँ, थोड़ा हेलो। कट के आ रहा है। हाँ, अभी सही आ रहा है, अभी सही आ रहा है। हाँ, तो हाँ। अब ये है कि जब केंद्र का बात हम करते हैं, केंद्र अपने हिडन जैसा रहता है और ज्यादातर बात स्टेट के ऊपर डाल देता है। तो हम्म। स्टेट क्या करते हैं, स्टेट में उनको, क्योंकि लैंड एक्विजिशन में लैंड प्रोसेस को देखते हैं, ये हम्म। बहुत शातिर दिमाग में काम करते हैं, वो हम्म। बहुत सोच समझ कर काम करते हैं। देखिए, हम लोगों ने एक देखे कि लैंड जहां आप विस्थापन करेंगे एक जगह से दूसरे जगह, तो दूसरे हाँ। ग्राम पंचायत का तो वो अधीन में है ना। और वो हम्म। लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये जो अधीन है पूरा स्टेट को, ऊपर से पंचायत राज और ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये दोनों एक ही साथ एक लॉबी सेट करते हैं और उसी हम्म। लॉबी को नीचे लाके में उठा के रखा हूँ। मैंने देखा हूँ कि कमिटी लोग पता नहीं होता है वो, क्योंकि जो सर्वे होता है, सर्वे कमेटी एसडीएलसी में डीएलसी में जब बनता है विस्थापन कमेटी, वो नहीं खुद वो अधिकारी लोगों को पता नहीं रहता है ये कमेटी में मैं हूँ कि नहीं। वहां वो कागज लेके बस साइन कराते हैं क्योंकि वो प्रेशर है। दूसरा एक चीज मैंने सुना, मतलब पूरा उसको मैंने सोच समझ कर सोचने की देखा कि मतलब डायरेक्टली स्टेट से कहा जाता है कि ये काम को आप इतना दिन में आपको करके देना है। वो अधिक को पता नहीं रहता है, वो घुमा के साइन करा देते हैं, वो काम को करा लेता है। तो एनटीसी सेंट्रल में चुप बैठ के अपना एनटीसी बोलता है कि मेरा काम क्या है, पैसा देना है, और बाकी जो तुमको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है वो तुम करो, हम नहीं जानते हैं। जहां तक मैं समझ पाता, राजनीति के हिसाब से वहाँ काम को निपटाते हैं। हम्म। हम्म। सबसे सबसे बड़ा ये जो यहाँ पैसा का मामला है और वो करोड़ों का मामला है। वो जी। जो एनटीसी देगा तो वो अलग है, वो कुछ नहीं है। यहाँ जी। लैंड रिफॉर्म है, लैंड रिफॉर्म का बात है। मैंने एक जगह से उठा के दूसरे जगह में जब बैठाता हूँ, तो दूसरे गांव को जो उनका पैकेज का सिस्टम है कि भाई लैंड हम्म। 35%, हाँ टोटल जो पैकेज, मान लो मैं 10 लाख ले लूंगा तो अलग बात है। जहां लैंड का हम्म। बात आता है, लैंड दूंगा और बाकी सर्विस दूंगा, तो वहां जो टोटल पैसा का 35% एक फैमिली का है। हम्म। तो वो लैंड दूसरे को मुफ्त में एक्वायर कर लिए है। तो जिन हम्म। लोगों को बैठाएंगे उनको तो पैसा नहीं देंगे ना, वो पंचायत को नहीं हम्म। देंगे। वो कलेक्टर क्या करता है, उसी फंड को डीएफओ को बोलता है इस फंड को हमको बाबू तेरे को देना है बाबू। तो पॉलिटिशियन चाहे वो अपोजिशन पॉलिटिशियन भी इसमें शामिल हम्म। हो जाते हैं और आदिवासी के ऊपर ये साथ देते हैं। मतलब ये दोनों जो रणनीति बनता है, अपोजिशन पूरा साथ मिलके और ब्यूरोक्रेसी मिलके इसको पूरा खेल ने अचानक मांगा तो 90 करोड़ के आसपास वो लैंड का पैसा आ रहा था। तो ओके। वो भी इसमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स की जगह ले लेता है। वो हम्म। स्टेट को पता है इसमें पैसा का है, तो फिर स्टेट वो जानबूझ के विधानसभा में क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन करता है, फिर उसी के हिसाब से फिर कलेक्टर को दबाव डालते हैं और ये इसको लाइन अप कराते हैं। ये भी एक कहीं अछूत नहीं है, हम एक दृष्टि में देखेंगे तो। I would really thank Aditi or and Simanchal Bhai that they were here today, and they did a very they painted the entire picture, like, or we have, bits and pieces of, like a problem, and they put it together, they put the problem together, like so yeah, I would like to thank them and like for being here. I सभी को जिंदाबाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इंसाफ इंडिया की तरफ से। हमारे दोनों वक्ताओं अदिति और सीमांचली, आपने बहुत ही गहराई से और ध्यान से हमें समझाया। जैसे पूजा बता रही थी कि
जो अलग अलग सी मुद्दे लगते हैं, लेकिन आप उनको इकट्ठे ऐसे लाए और उनको जो हम दूसरी श्रृंखला की दूसरी वेबिनार्स में हमने कवर किया है, सैनिकरण और माइनिंग और लॉज के हिसाब से भी, लैंड लॉज के हिसाब से भी, वो सब इसमें बहुत हमारे लिए भी इकट्ठा आया है। तो इसके लिए आपने जो टाइम हमें दिया उसका बहुत ही आपको शुक्रिया। And I would also like to huge thanks to Pooja for doing the moderation and translation. Not an easy job at all. So thank you so much again to you as well. And just finally, we are not doing the series just to impart information, but we want it to become a starting point for all of us to talk about these things, to let bring out what is happening in the Adivasi areas in solidarity with the struggles like Simanchal Bhai's struggles, and be in solidarity with them. Thank you and good night to everyone.